Bismillahirrahmanirrahim. I'm very hopeful that you all guys will be very fine and doing very great at your homes with the grace of Allah Almighty. So, welcome back to my YouTube channel and particularly your own learning YouTube channel. Today, we will talk about a word that is while. WHILE. इसको उर्दू में हम बोलते हैं या इसका उर्दू तर्जुमा होगा जबकि. While जबकि. So, let's start learning English without any delay. So, how can we use while in the sentences and how can by using of while we can enhance our speaking skills. And this word is a very common word and I'm very hopeful that you all guys have already have knowledge of this word while. WHILE. While indicates when there is a simultaneous action. And what is simultaneous? Simultaneous किस बला का नाम है कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हों. Like two or more actions happens at the same time. जब एक या दो से ज़्यादा चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हों तो then we will use while. जब एक या दो से ज़्यादा चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हों तो तब हम while का इस्तेमाल करेंगे. कैसे? How? For example, he was studying while his brother was watching TV. वो पढ़ाई कर रहा था जबकि while. अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं. You will note and you will see and you will observe as well कि इसमें दो चीज़ें आ रही हैं. He was studying, वो पढ़ रहा था while, जबकि his brother was watching TV, जबकि उसका भाई जो है वो टीवी देख रहा था. She was eating, वो खा रही थी या वो खाना खा रही थी while watching a movie. वो खाना खा रही थी जबकि साथ वो एक दूसरा काम क्या कर रही थी? को मूवी देख रही थी. तो इन दो एग्जाम्पल्स में यू कैन सी वेरी क्लियरली कि whenever two things happens at the same time then we will use while. Let's take one more example. Like he played a shot while spectators appreciate him. Like उसने एक अच्छा शॉट खेला या छक्का लगाया या चौका लगाया, कुछ भी आप कह सकते हैं, जबकि तमाशाइयों ने उसको अप्रिशिएट किया. या ऐसे भी हम कह सकते हैं he shot a six and spectators claps for him, कि उसने एक छक्का लगाया और तमाशाइयों ने उसके लिए तालियां बजाई. तो आई एम वेरी होपफुल. This is a very simple word and you know what? This word when you will use in your daily sentences, it will help you a lot to enhance your English language skills. For example, एक और word है during. DURING. During का भी जो इस्तेमाल है वो same as it is ऐसा ही है. Like for example, he was studying in the classroom during his parents called him. Like उसका वो अपनी क्लास में मसरूफ़ था या वो अपनी क्लासेस ले रहा था, इस दौरान उसके वालिदैन ने उसे फ़ोन किया. So during and while you can use at the same time in the sentences, but don't forget, I will say again and again, don't forget कि जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही हों at the same time when any action happens, तो then we will use what? क्या यूज करेंगे? अब बोलो ना, while. WHILE. तो while का इस्तेमाल करेंगे. आई एम वेरी होपफुल you will understand this word very easily. And at the end, I will just like to say, please subscribe my channel, keep watching, keep learning, and keep sharing. Thank you so much.